Hi everyone. In today's video, we are going to deal with the similarity criteria for the chapter triangles. Okay. In the previous videos, we had done BPT, then the converse of BPT, and also dealt with important questions from exercise 6.2. But now over here, we are going to understand in depth all the similarity criteria, and we will be dealing the respective questions from NCERT based on them. We are not going to do much of questions over here, but understanding the criteria is very important over here, and we will be doing per question per criteria. Okay, so now let's start with the first one. The criteria is AAA criteria. In a triangle, there are three angles, right? So when we say AAA criteria, we are talking about all the three angles together. Let's read the theorem based on it. If in two triangles, corresponding angles are equal, okay, they have said corresponding angles. They haven't given any count over here, right? So that means they are talking about all the three angles together. So all the three corresponding angles are equal. Then their sides, the corresponding sides are in the same ratio, and hence the two triangles are similar. First of all, we are not going to deal with any proofs. Proofs is not in your syllabus for any criteria. The only proof that is in your syllabus is for BPT. But over here, we are going to understand what exactly the criteria are, right? So over here, they have said that angle A equals angle E. I have marked them in the color coding, right? Angle A equals angle E, angle B equals angle F, and angle C equals angle T. They are telling us that all the three angles are equal, all the three corresponding angles are equal, right? Then the sides are going to be, the corresponding sides are going to be in ratio, and hence the triangles are similar. So basically, अगर हमारे पास तीनों angles equal हैं, तो मतलब हमारे दोनों triangles similar हैं, simple, right? So what I can write, triangle ABC is similar to triangle EFD. I did not take DEF by default कि ABC है तो DEF होगा. No. Just see what I did over here. We had A equals to E. तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे E है. See, जब हम similarity of triangles की बात करते हैं, correspondence set करना in the naming of the triangles is equally important so as to proving the question, right? तो अब यहाँ पे मैंने naming different की थी जानबूझ के so that you understand कि अगर हमारा ट्रायंगल का नाम एक नॉर्मल से ट्रायंगल से अलग हो जाए तो उसको कैसे हमें सेट करना है, राइट? A is equals to E, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग E आया यहाँ पे. B was equals to F, तो B के कॉरस्पॉन्डेंस में F, and last C was equals to D, and hence C came in correspondence with D. Okay, so the triangles that we have got equal, similar over here are ABC, similar to EFD. Okay, and what is the reason for it? The reason is AAA. Okay, and now in the theorem they had already mentioned, then the corresponding sides are also in the ratio. Triangle similar hai hamare. So what we have the corresponding sides also in the ratio, that is AB over EF equals AC over ED equals BC over FD. ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग ही जो ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनती हैं. लेट्स सी हाउ. देखो पहले ए बी है तो वहां पे ई एफ है, ए बी ओवर ई एफ लिखा है यहाँ पे, राइट? देन वी हैड बीसी, बीसी के कॉरस्पॉन्डेंस एफ डी, तो बीसी एंड एफ डी आए रेशियो में, एंड द लास्ट ए सी एंड ई डी, ए सी एंड ई डी. दिस इज हाउ यू हैव टू सेट द नेम्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड the correspondence of the sides as well. Okay, now this was your first criteria, AAA. लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास तीनों एंगल इक्वल्स हैं, राइट, तो हम AAA कह रहे हैं. लेकिन अगर ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास दो एंगल्स भी इक्वल हो तो ASP से थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट? दैट इज बाय डिफॉल्ट. तो इसका मतलब we have another theorem actually. It is not given as a theorem, but as a remark in the NCERT about AA similarity. Okay, and let's go through that. The remark I have already pasted over here. It's given on page number 88 in the newer NCERT.
if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. Let's see क्या कहना चाहते हैं. Okay, they are saying that angle y equals angle q and angle x equals angle p. Let's see about the first triangle, that is xyz. Okay, xyz के अंदर angle z क्या होगा? Angle z is going to be 180 minus angle x plus angle y because of ASP, right? And then angle r from the other triangle is going to be 180 minus angle q plus angle p. That is also because of ASP, right? Now, what we had x and y equal to p and q respectively. So obviously उनके sums भी equal होंगे. And when we are subtracting from the same value, that is 180, that means the remainder is also going to be equal. Remainder क्या है? Remainder is z and r. So what are we doing actually? We are back to AAA, but we are also saying कि अगर हमारे पास डबल ए है तो ट्रिपल ए की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है. Just see practically. I'm taking an example over here. यहाँ पे मेरे पास एक एंगल है 30. This is a 30, right? I have 80 over here. I have 80 over here. इनका सम क्या होता है? 30 and 80 का 110. ये 70 आया, ये 70 आया, right? यही चीज वो कह रहे हैं कि अगर आपके दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं then also we can claim the triangles to be similar. And hence questions में when you are going to prove, actually you will see that double A is a blessing. आपको थर्ड एंगल की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. Every time you don't need to actually calculate ASP and you can just do away with double A. So we can say comfortably that triangle XYZ is similar to triangle PQR. And what is the reason? Reason is going to be AA, similarity. This is going to be your reason. थ्योरम ट्रिपल ए पे बेस्ड है, लेकिन उससे हमने डिडक्ट किया कि डबल ए इज ऑल्सो equally satisfying and equally worth noting. So we will be using double A instead of triple A. I hope it is clear. Okay. Now, I have picked example 4 from NCERT and it is based on AA similarity. Okay. Let's go through the question. In this figure 6.29, we are given that PQ is parallel to RS. PQ parallel to RS. Prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. Okay. अब यहाँ पे when we are dealing with similarity, as I have been emphasizing on the correspondence, whether you are supposed to prove similarity, whether the triangle's name is given, or whether you are supposed to form the triangle's name on your own, correspondence is must. Every time if you see in the theorems also, they are writing corresponding angles, corresponding sides, corresponding ye, corresponding wo. The word corresponding is very, it's important. Okay. अब वो important है इसलिए अब यहाँ पे आपको ये समझना है. देखो नेम में हमें क्या गिवन है? We are given P corresponding to S. Okay. P corresponding to S. P is not corresponding to R. कि P ऊपर है R ऊपर है तो आप दोनों बोल ले लोगे. No. P के correspondence में S है. Q के correspondence में R है. Okay. We need to pay attention to this thing. So what are we going to do now? Okay, we are given proof. We are given that PQ is parallel to RS, right? PQ is parallel given to RS. It is given. The reason comes along. Now, if PQ is parallel to RS, angle P is going to be equals to angle S. Why? Quickly. Angle P equals to angle S. The reason is alternate interior angles, right? I am actually used to of writing in shorts. Alternate interior angles, right? Now, angle P is equals to angle S. Then we also have, अब यहाँ पे आपके पास काफी flexibility है. See what you can write. You can write angle Q is equals to angle R. Same reason आ जाएगा, right? Or you can also write
angle POQ equals to angle SOR. The reason is going to be vertically opposite angles. I have given you all the three angles equal with respect to with respective reasons, right? So the choice is completely yours. And what do we get? हमारे तीनों angles equal हो गए. So what we have? Easily we can claim that triangle POQ is similar to triangle SOR by AA similarity. अब एक चीज, अगर आपने यहाँ पे दो एंगल्स लिखे हैं तब AA similarity लिखना. If you are writing three angles, then write AAA similarity. Do not do कि तीनों एंगल्स लिखे तो आपने AAA नहीं लिखा, AA लिख दिया. ऐसे मत करना. मैंने यहाँ पे और लिखा था आपको समझाने के लिए. Otherwise, I am not in a favor of actually using the third. Two is enough. I am a lazy person. दो की जरूरत है, दो ही दूंगी, मैं ज्यादा नहीं दूंगी. Right? I'll prefer to save on my time and do away with the next question. Okay. Now, this question we have proved that yes, triangles are similar just by a similarity. So, now, the next criteria. We have triple S criteria. Triple S means we are talking about side, side, side. Okay. One thing that I forgot to discuss, these criteria are actually quite similar to the congruency criteria, right? वहां पे आपके पास क्या होता था? SSS होता था, right? लेकिन उसमें हम क्या करते थे? Over there in congruency, we used to do all the corresponding sides are equal. यहाँ पे हम करेंगे that all the corresponding sides are in proportion. Because if you remember, in the first video, we had learned that similar triangles की शुरुआत कहाँ से होती है? The two conditions are, first, the corresponding sides are supposed to be in proportion, corresponding angles are supposed to be equal, right? तो अगर हम sides की बात कर रहे हैं, हमें sides equal नहीं चाहिए, हमें sides proportion में चाहिए. Okay? Now, this question says, if in two triangles, sides of one triangle are proportional to, that is the same ratio, the sides of the other triangle. मतलब एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. मतलब अगर आपकी साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो ही जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट, हाउ डू वी राइट अबाउट दिस? देखो, वी हैव ए बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या जा रहा है? ऑल्दो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, सो वी विल कंसिडर जैसे गिवन है वैसे ही हम लेंगे ए बी ओवर पी क्यू, राइट? एंड देन ए सी ओवर पी आर, राइट? एंड देन वी हैव बी सी, या वी हैव बी सी ओवर क्यू आर. हमें ये गिवन है, राइट? हमारे पास तीनों साइड्स हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में है. अब तीनों साइड्स अगर हमारी रेशियो में आ गई, so we can claim that yes, triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS similarity. ट्रिपल एस नहीं छोड़ोगे, ओके, मैं भी लिख देती हूँ. ट्रिपल एस नहीं छोड़ोगे, उसके आगे आप लिखोगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी. Why we are not supposed to leave only triple S now? Because triple S can stand for triple S congruency and triple S can stand for triple S similarity. We are dealing with similarity over here. You will write the word similarity. अगर कहीं क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें क्लब करनी है, congruency भी चाहिए, similarity भी चाहिए, तो you have to be careful that you write the word SSS congruency or SSS similarity. Please be careful on that. Okay. Now, this was the 6.4 theorem about triple S. Now, moving on with the question. देखो, this is example 5 from NCERT, right? We are supposed to find angle P over here. सिर्फ छोटा सा लिखा है find angle P, observe the figure, find angle P. इसका मतलब observation. You have to stress on the observation over here because कुछ भी written में नहीं है आपके पास. What you need to do, you just need to look around in the figure that what is equal to what is in the ratio, and according to that you have to
डू द क्वेश्चन। अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे प्लीज, क्योंकि हमें पकी पकाई खीर नहीं मिली हुई यहाँ पे। What we have over here, AB is actually related to RQ. कैसे पता मुझे? This is 3.8. 3.8 का डबल होता है 7.6. 6 का डबल होता है 12 एंड 3√3 का डबल है 6√3. तो अब मुझे नजर आ रहा है कि yes, this is how the sides they have dispersed. Basically, उन्होंने आपका सेकंड ट्रायंगल रोटेट कर दिया है, एज इट इज नहीं दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस हमें एकदम से नजर नहीं आएगी, बट यू हैव टू फाइंड इट। ओके, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी कैन राइट ए बी ओवर आर क्यू, बिकॉज आई कैन सी दैट 3.8 है, वो 7.6 है। ओके, व्हाट इज दिस, वैल्यूज हम बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड देन वी हैव ए सी ओवर, ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में देखो आर लिखा था, ये सी, ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर लिखा, राइट। अब भी मैं ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर लिखूंगी, तो ए सी ओवर आर पी। ओके, देन वी हैव बी सी ओवर, अब सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में पी आया था, तो पी इधर आएगा और क्यू इधर आएगा। देखो इस तरह से हमें कॉरेस्पॉन्डेंस सेट करनी है, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑन दैट। ओके, अब ट्रायंगल्स का क्या नाम बना, एंड फर्स्ट लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। व्हाट वी गेट, AB is 3.8 over 7.6, AC is 3√3 and RP is 6√3, then BC is 6 and QB is 12. What we get this equals to, we get they're all equal to half, right? So therefore triangle ABC is similar to triangle. Now tell me, what is going to be the name of your second triangle? पहले ट्रायंगल का नाम सेट करना तो इजी है, कुछ भी ले लो। The thing is, you have to set the second triangle's name over here, right? Until the time we don't do, we cannot proceed. और अगर वो गलत हो गया तो आपका फर्स्ट हाफ तो कंसिडर ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन सेकेंड हाफ को गलत मार्क कर दिया जाएगा। ओके, सो व्हाट्स द नेम ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल? ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर था, बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्यू था, सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में पी था। सो इट इज गोइंग टू बी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। ओके, अब यू विल नॉट लीव इट एज इट इज, क्योंकि ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर हुए हमारे, ट्रायंगल सिमिलर हुए SSS क्राइटेरिया से, राइट? SSS सिमिलैरिटी। We are done with triangles being similar, but the question hasn't ended yet. याद है अगर हमने क्या किया था इसके अंदर, इसमें हमें बताया गया था that when the sides are proportional, then the corresponding angles are equal. Okay, तो अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या मांगा है, they have asked for the value of angle P over here, right? But before that, we have to understand the corresponding angle to P in the first triangle. P के correspondence में है C. Do we have the value of C over here? No. That means we need to find the value of C over here. So we will start by writing in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equals 180. The reason is ASP. Okay. A और B की value substitute करेंगे 60 and 80. 60 plus 80 plus angle C equals 180. So what do we get? Angle C is equals to 180 minus 140. So we get angle C is equals to 40 degree, right? Now, since triangle ABC is similar to triangle RQP, angle C equals angle P. अब यहाँ पे रीजन क्या है? देखो, जब हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, so what we can do, we can actually equate the corresponding angles. We will just write corresponding angles are equal. Okay, CPCT होता था कॉन्ग्रुएंसी में, उसी तरह से यहाँ पे CPCT तो नहीं है हमारे पास सिमिलैरिटी में, बट we will actually always have कि अगर हमारे ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में है।
और अगर साइड्स प्रोपोर्शन की वजह से हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, then the corresponding angles are equal. So you have that flexibility. The only thing is आपके पास सीधी सीधी जैसा word नहीं exist करता. Okay, now angle C is equals to angle P. So therefore angle P equals 40 degree and that's all. So we had to prove first the similarity, then we found out the third angle from the first triangle, and that gave us the value of the missing angle in the second triangle as well. Okay. Now, what we have over here, the third criteria, which is SAS criteria. Okay. The theorem says if one angle of a triangle is equal to one angle of the another triangle. I didn't mark the angles over here. Let it be these two angles. Okay. Now, if one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional. I am highlighting the word side including these angles. Okay. मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है? Let's not have that. Okay. So what are we having? We are given over here that angle B is equals to angle Q. पहले एंगल की बात की उन्होंने, वन एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल इन द अदर ट्रायंगल एंड देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब एंगल बी और एंगल क्यू जिस साइड्स के बीच में है, सैंडविच पॉलिसी, कॉन्ग्रुएंसी में होती थी सैंडविच पॉलिसी, यहाँ पे भी सैंडविच पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है. मतलब हम ए सी और पी आर की बात नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एंगल बी और एंगल क्यू ए सी और पी आर से रिलेटेड नहीं है. Angle B or angle Q is coming between the sides AB, BC and PQQR respectively of the two triangles. Okay, so we are talking about those two sides. We are given this was one, and the second thing was that AB over PQ equals BC over QR. जो sides हमारी angle contain कर रही हैं, they are in ratio. Okay. So AB over PQ equals BC over QR. अगर ये दो चीजें, पहला एक एंगल और दूसरा the sides containing that angle are in ratio, then the two triangles are similar. And what is this called? हमने क्या किया है? एक एंगल लिया, दो sides ली. So we got SAS. This is the SAS similarity criteria for similarity. Congruency में सब equal होता था, यहाँ पे equal नहीं है. यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शन में है, एंगल्स इक्वल है. डू नॉट गेट कंफ्यूज प्लीज. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट अबाउट इट. दैट मीन्स ट्रायंगल क्या नाम था? ए बी सी एंड पी क्यू आर. सो वी हैव ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय SAS similarity. Okay. Side, angle, side. Side proportion, angle equal, side proportion. Okay. Now, moving on with the question. I have picked example 6. So, if you notice, 3 criteria and the 3 examples I have picked, जो example जिस particular criteria से related था, I have picked it according to that. Okay. Now, question में क्या given है हमें? Figure and oh, I forgot to write what are we supposed to do over here? Just a moment. We are just supposed to show. I'll just write down the question. Missed copying it. Show that angle A equals angle C and angle B equals angle D. So this is what we have. This is what they want actually, right? We are given a ratio of the sides over here. OA over OA. Okay, this dot. What does this dot means? क्योंकि बच्चों को यहाँ पे भी confusion होती है कि what does this dot means? Decimal का क्या मतलब है? Whenever we are talking with respect to geometry and we have to multiply something, it is with the help of a dot. Exponents में देखा था dot, उसी तरह से geometry में भी dot आता है. So what they have given over here basically, let me write it down again. Given OA times OB equals OC times OD. This is what they have given to us, right? Now, let's see the figure.
ओ ए ये है एंड ओ बी यहाँ है, देन इट इज ओ सी एंड ओ डी. देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी, साइड्स मल्टीप्लाई होने का कोई लॉजिक नहीं है, राइट? सो इस जो चीज हमें गिवन है ना, हमें इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करना है. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर? वी आर गोइंग टू राइट ट्रायंगल. पहले ट्रायंगल को हम देखेंगे. सो व्हाट डू वी गेट? ओ ए, सॉरी, वी विल हैव, देखो, ओ ए के नीचे मैं ओ सी भी लिख सकती हूँ, ओ डी भी लिख सकती हूँ, राइट? क्या हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग? वी विल राइट ओ ए. ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे क्या जाएगा? इट इज गोइंग टू बी ओ डी इक्वल्स ओ सी ओवर ओ बी. ओ डी तो सी का आ गया, जस्ट अ मोमेंट. इट इज गोइंग टू बी ओ ए ओवर ओ सी equals OD over OB. Why did I change now? I had written something else. Then why did I change? Because ये देखो, अगर हमारे पास OA इस ट्रायंगल का है तो OC has to belong to the other triangle. And similarly, if OD is from the first triangle, OB has to belong to the other triangle. That is why I changed. Right? Now, what we have? OA over OC equals OD over AB. And we also have, ये तो given है. This is given to us. After that, we have angle AOD equals angle BOC by vertically opposite angles. So what did we get? We got the two sides in ratio and one of the angles included between them to be equal. So what do we get now? We get triangle AOD not equal but similar to triangle A के correspondence में क्या है? We have COB. Please look on the correspondence. What I have done, sides में भी maintain की correspondence, angles में भी maintain की, triangle के नाम में भी maintain करी. A के corresponding C आया था. A के correspondence, see, I committed a mistake over here. It had to be COB over here. देखो, verify करते करते mistake मिली, right? So what did we get? A के correspondence में C आया, D के B, D, B, D, B. So three things every time the correspondence is maintained. Okay, so what do we get now? Triangles are similar by SAS similarity. Right? Now, when the triangles are similar, it means their corresponding angles are supposed to be equal. So what do we get? Angle A equals angle C and angle D equals angle B. और reason क्या है यहाँ पे? Corresponding angles. You can write equal angles, equal corresponding angles of similar triangles, right? So what did we do over here? In this video, we have learned the three similarity criterias. Double A, started with triple A, but उसको हमने remove करके double A convert किया. Then we did triple S, and after that we did SAS. Okay, one important thing. Earlier in NCERT, there used to be another criteria, which is RHS. But now they have actually removed it from NCERTs. However, some schools still actually do that, right? So I have not included RHS criteria in this video, but I will be making a separate video for those children who may need it based on their school teachings, right? So such that if you want, you can practice on RHS as well, right? And further, soon I will be releasing a video based on the important questions picked from exercise 6.3, which is the last exercise for triangles in NCERT. Okay. Till then, happy learning.